ओम ब्रह्माण्यकृतं परेशस्तोत्रम. श्री मुद्गल पुराण खंड 9 अध्याय 1 श्लोक 19 ते 49. ब्रह्माण्युचुः नमस्ते परेशाय विघ्नाधिपाय परेशां सदा सौख्यदात्रे हिताय स्वसंवेद्यरूपाय चानंददाय निजानंदयोगाय ढूंढे नमस्ते. अनाथाय नाथाय सर्वात्मनां ते सदा मोहहीनाय नेतिधराय शिवायाथ त्रैविध्य भावप्रदात्रे निजानंदयोगाय ढूंढे नमस्ते. समायाथ माया स्वरूपाय द्वंद्वप्रकाशाय सर्वात्मकायैव विष्णु महानंदरूपाय सर्वातिगाय निजानंदयोगाय ढूंढे नमस्ते. सदा सत्यरूपाय सर्वात्मने ते विकारैर्विहीनाय सूर्याय भूम्ने अनंताय भेदादिभिर्जिताय निजानंदयोगाय ढूंढे नमस्ते. अपार स्वरूपाय नानामयाय विहारेषु सक्ताय पूर्णात्मकाय महाशक्तये शक्तिरूपाय मोहिन् निजानंदयोगाय ढूंढे नमस्ते. निरोधस्वरूपां समास्थाय बुद्धिं निजानन्दभ्रान्तिप्रदां सिद्धिरूपं प्रविश्यैव तुर्येषु बिम्बात्मकाय निजानन्दयोगाय ढूंढे नमस्ते. ततः सांख्यरूपं विनिर्माय तुर्यैस्तदाकाररूपाय वैबोधकाय सदा स्वात्मनिष्ठाय संकल्पहन्त्रे निजानन्दयोगाय ढूंढे नमस्ते. ततो बोधरूपं विनिर्माय बोधस्वरूपाय मायामयाकारणधाम्ने सदाखेलकायाथ नानाप्रचारिन्नि जानन्दयोगाय ढूंढे नमस्ते. ततो देहिरूपाय निर्माय तं वै सदैकप्रबोधाय भ्रान्तेर्धराय स्वतो भ्रान्तिहीनाय सोऽहं प्रदाय निजानन्दयोगाय ढूंढे नमस्ते. ततो बिन्दुमात्राय निर्माय बिन्दुं चतुर्धा चतुष्पादरूपेण खेलिन् अनन्तस्वरूपाय देहप्रचार निजानन्दयोगाय ढूंढे नमस्ते. ततो नादरूपं विनिर्माय नादस्वरूपाय तत्स्थाय चैतन्यदाय अजायाथ त्रैविध्यदेहस्थिताय निजानन्दयोगाय ढूंढे नमस्ते. समास्थाय बाह्यान्तरे संस्थिताय विनिर्माय सौषुप्तरूपं परात्मन् तदाकाररूपेण चानन्ददाय निजानन्दयोगाय ढूंढे नमस्ते. सदा स्वप्नरूपाय सर्वान्तरस्थाय सूक्ष्माय स्वत्वात्मने खेलकाय विनिर्माय सूक्ष्मं त्रिधा संस्थिताय निजानन्दयोगाय ढूंढे नमस्ते. नमस्ते प्रभो स्थूलरूपाय तत्र विनिर्माय जागृतादाकाररूप सदा यन्नभूताय बाह्यात्मकाय निजानन्दयोगाय ढूंढे नमस्ते. गणांस्ते गणेशात्मरूपेण सुष्टान्तवांशतान् रक्ष ब्रह्मेश दासान् सदा पादपद्मे रतांस्ते कुरुष्व निजानन्दयोगाय ढूंढे नमस्ते. गजाकारतुण्डय लंबोदराय चतुर्बाहवे शूर्पकर्णाय तुभ्यं त्रिनेत्राय पाशाङ्कुशादैर्युताय निजानन्दयोगाय ढूंढे नमस्ते. नराकाररूपाय कंठादस्थास्था एकदन्ताय रक्तांबराय महाखुध्वजाय खुवाहाय नित्यं निजानन्दयोगाय ढूंढे नमस्ते. अनन्तप्रसूतिश्च ते वामभागे महासिद्धिरूपा तथा दक्षिणाङ्गे धृते पूर्णमाये परे देवदेव निजानन्दयोगाय ढूंढे नमस्ते. स्वसंवेद्यनाम्नि पुरे संस्थिताय प्रमोदादिभिः सेव्यमानाय तुभ्यं तथेक्षो समुद्रे सुलीलाकराय निजानन्दयोगाय ढूंढे नमस्ते. समाधिस्वरूपं गणेशं स्तुमीमः कथं ब्रह्मणां ब्रह्मभूतं महात्मन् तथापि स्वबुद्ध्या प्रमाणैः स्तुतोऽसि निजानन्दयोगाय ढूंढे नमस्ते. वयं धन्यरूपा गणाधीशतैः स्तवे नाथ पूजादिना दीनबन्धो
नमस्ते नमस्ते प्रसीदाशु भूमन् निजानन्दयोगाय ढुण्डे नमस्ते। मुद्गलवाच एवं स्तुत्वा गणाधीशं प्रणमेस्तु प्रजापते। ब्रह्माणि ताथ्यतोवाच हर्षितः स गजाननः। श्रीगणेश उवाच वरान् ब्रूत हृदिस्थान् वै ब्रह्माणि तुष्टिमागता। दास्याम्यनेन स्तोत्रेण तपसा दुर्लभानपि। भवत्कृतमिदं स्तोत्रं मम सन्तोषकारकं। भविष्यति न सन्देहः सर्वसिद्धिप्रदायकं। यः पठेत् पाठयेद्वापि श्रावयेन् मानवोत्तमः स भुक्त्वा ख्यलिकान् भोगान्नते स्वानन्दो भवेत्। विजयप्रदमेतद्धि पुत्रपौत्रपदं भवेत्। धनधान्यपशूनां तु दायकं प्रभविष्यति। अङ्गहीनजनानां तु स्वङ्गदं रोगनाशनम्। अलक्ष्मीसङ्कटस्यैव दहनं पाठकारिणं। विद्याज्ञानादिकं सर्वं लभते नेन निश्चितं। मुक्तिं ब्रह्मभूयं पठनात् श्रवणात् किल। षट्कर्मसाधने सिद्धं परकृत्यविनाशनं। राजबन्धहर चैव भविष्यति सुसेविनाम्। 21 चैकविंशतिदिनानि यः पठतेत् स लभेत् सर्वमीप्सितं नात्र संशयः। एवं गणपतेर्वाक्यं श्रुत्वा ब्रह्मणि विघ्नपं प्रणम्य हर्षयुक्तानि जगुस्तं च प्रजापते इति। श्रीमद्मुद्गलपुराणे योगचरिते स्वसंवेद्यस्वरूपवर्णने ब्रह्माण्यकृतं परेशसूत्रं सम्पूर्णम्।